ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये सारा स्टार्ट होता है फैराडे से। तो फैराडे के ये कहता है व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड अ कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल चेंज होता है उस कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अब वो जो ईएमएफ है वो ऐसे प्रोड्यूस होता है, वो उस प्रोड्यूसिंग एजेंट को यानी फ्लक्स को या चेंज इन फ्लक्स को क्या करता है, अपोज। जो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है लेंज़ लॉ में, ये क्यों अपोज करेगा? वो अपोज इसलिए करता है क्योंकि वी विल नॉट गेट एनर्जी फ्रॉम नथिंग। तो दैट इज एक्चुअली व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड अ कॉइल, द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ईएमएफ। अब वो तो बात हुई लेंज़ लॉ की और फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हमें ये भी देता है जो E है वो किसके बराबर, दैट इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। अब वो जो EMF उसमें प्रोड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज लिंक्ड विद दैट कॉइल। अब उसके बाद आया सेल्फ इंडक्टेंस। अब इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर होता है एन इंसुलेटिंग कंडक्टर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे दिखाया गया है सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस वो प्रॉपर्टी है जिससे एक इंडक्टर अपोज करता है चेंज इन करंट को। अब ये चेंज इन करंट को अपोज क्यों करता है? जो करंट है वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जब करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। अब जब फ्लक्स चेंज होगा दैट इज लिंक्ड विद दिस इंडक्टर और विद दिस कॉइल and EMF is induced in this coil as per the Lenz's law. That EMF produced opposes the agent that is producing that change. तो अब यहां पे फ्लक्स की बात आ रही है। फ्लक्स क्या है? जो करंट है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को पिक्चर करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दी गई हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती हैं फ्रॉम नॉर्थ से टू द साउथ पोल, और इन द मैग्नेट दैट आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ दैट मींस दे फॉर्म द क्लोज्ड लूप्स। अब वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड होती हैं एक एरिया के साथ, that gives us the flux. That means flux is equal to B dot A, that is BA cos theta. तो वो जब फ्लक्स लिंक्ड होता है किसी कॉइल के साथ, यहां पे हम इंडक्टर की बात करेंगे, जब करंट फ्लक्स को प्रोड्यूस करता, अब करंट चेंज होगा, सीधी सादी बात है, फ्लक्स भी चेंज होगा। अब जब फ्लक्स चेंज होगा वो चेंजिंग फ्लक्स इस इंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। एज पर लेंज़ लॉ वो जो ईएमएफ प्रोड्यूस करता है वो अपोज करेगा उस एजेंट को जो उसे प्रोड्यूस करता है। दैट मींस द चेंज इन फ्लक्स। अब इन फर्स्ट केस इट इज डीसी। When the key is pressed on, that means current increases from 0 to maximum value. During that 0 to maximum value, the flux changes. When the flux changes, an EMF is produced and back EMF is produced which opposes the increase in this current. And that property by which a back EMF is produced in that inductor, that property of this inductance is called as self-inductance. In second case, when the switch is turned off, that means current is going from maximum value to zero value. That means we are getting a change. When we are getting a change from maximum value to zero value, the flux is going from maximum to zero. So this inductor induces an EMF, a back EMF that opposes that decrease. So we are getting EMF in this direction in first case. In second case we are getting EMF in this direction. That means this EMF tends to increase this current as the current is going to decrease. In this case current is going to increase from 0 to maximum value, so this EMF opposes that increase. Mathematically we can show that this phi is directly proportional to I. As the current is increasing, flux is increasing. As the current is decreasing, flux is decreasing. So
To eliminate this proportionality sign, we can introduce constant of proportionality, and that constant of proportionality is equal to Li, where L is coefficient of self-inductance. Now EMF is produced, a back EMF is produced in this inductor which opposes the change in current. So we can say that E is directly proportional to di by dt. That back EMF is produced, that is directly proportional to rate of change of current. But as this back EMF is opposite to the change in current, we say that E is minus di by dt. To eliminate this proportionality sign, we introduce constant of proportionality, and that constant proportionality is again E, where E is equal minus L di by dt. So when we change the current, the flux changes. When we are changing the current, the rate of that change of current is equal to rate of change of flux, and when the flux linked with the coil changes, a back EMF is produced, and that property of producing that back EMF in an inductor is called as self-inductance. Hope it will be helpful. Thank you.